Today I'm discussing about the isolation, identification, intensity of alternaria leaf spores of aloe vera in the vicinity of Tandojam in Hyderabad. Contents, introduction, material methods, isolation and identification, foliar disease, causing fungi, symptoms, identification of pathogens, results and conclusion. Introduction. Aloe vera is a succulent plant species and evergreen perennial plant, but grow wild in tropical and subtropical around the world and cultivated for agriculture and medicinal uses. Aloe vera is sold in capsules and liquid form, taken internally promote health. Aloe vera plant used to various health conditions for thousands of years. Aloe vera gel taken orally by mouth and blood sugar level. People with diabetes, it may be also lower the cholesterol. The species is also used for decorative purpose and grows successfully indoors and as a potted plant. Aloe vera gel is widely used in beauty products, diet supplements, health juices, and pharmaceutical purpose. And aloe vera is an economically important plant because the gel contains inner leaves and used in pharmaceutical use, food, cosmetic, industry, and traditional use. The leaves of aloe vera contain a certain amount of water, which brings to this plant wonderful soothing quality. Aloe vera gel a lot of vitamins and essential minerals that are beneficial for human health and found the such vitamins A, C, E, B1, B6, potassium, calcium and magnesium. There are about 18 amino acids found in aloe vera, and these amino acids work closely with other essential compounds, constitute many health benefits of aloe vera. Aloe vera is widely used to product for personal care product, cosmetic, detergent, soap, washing hand and dietary supplement. Aloe vera is added to other ingredients to make soap, facial toners and facials, scrub, marks के लिए आप use करते हैं, lip balm में shampoo, creams and prepare for aloe vera juice and promote the hair growth. Material and methods. The present study were conducting in the Department of Plant Protections in Agriculture University Tandojam and Agriculture Research Institute Tandojam. Isolation and identification of foliar disease causing fungi. Isolation of foliar disease causing fungi was conducted by using standard isolation techniques. Foliar samples of different aloe vera plants from Tandojam nursery and were collected in polythene bag. Samples were brought in the laboratory for the further study. This slide shows the sample collection from the field. Identification of pathogen used the standard keys and morphological and culture correction of isolation of fungi. And this slide shows the laboratory isolation and identification of pathogens. Now results. Symptoms. The alternative leaf spores of aloe vera was observed as large, necrotic, sunken, circular to oval, dark brown spores which were present on both surface and leaves. From infected leaf, alternaria was predominantly isolated and confirmed under microscope. This slide shows the picture A, the healthy plants of aloe vera, and B and C is the infected leaves of aloe vera. This slide shows the graph of disease incidence percent of alternaria leaf spores of aloe vera at different nurseries. You can see the different nurseries collected the aloe vera leaf, and the major show the Gani Bhai nursery and Amjad is the highly infected of aloe vera. And the infection frequency percent of different fungi from alternaria leaf spores of aloe vera. You can see the alternaria alternata, Aspergillus niger, and Aspergillus flavus and Rhizopus species. And this is a picture of microscopic identification of alternaria alternata, morphological characters under microscope. Conclusion. Several plant diseases, especially foliar disease, are of prime importance, and because they reduce the
the quality of foliage, ultimately decrease the economic value of growers. The isolation and identification of foliar fungi reveal different fungi belong to different genera. Alternaria alternata, Aspergillus flavipes, Aspergillus niger, and Rhizopus species. The infection frequency percent of all foliar disease consists of laboratory analysis and nursery observation. Fungal association with those foliar disease was confirmed by laboratory isolation, and the same time disease incidence was also recorded all observed nurseries. Among those, the disease was alternaria leaf spores of aloe vera from infected leaf. Alternaria alternata was predominantly isolated and confirmed under microscope. Significantly highest infection percentage of recorded of Alternaria alternata 34.44% and followed by the Rhizopus species 14.44% and Aspergillus niger 8.89% and Aspergillus flavipes is 7.77%. Recorded with lowest frequency percent from the nurseries of Hyderabad and Tandojam. Moreover, all our passes significantly highest infection frequency of Alternaria alternata 32.78% was recorded from Hyderabad and Tandojam nursery. The results so far achieved in the current study are hope that will be helpful for further study and sustainable management of aloe vera plants. Thank you. Have you any question? Yes. Yes. I have a question. Many people they are now growing. So have you done any sampling from the initial fields as well? Yes. Yes. You know that I am belong to Pure Agriculture University of. We have 3 nurseries as a horticulture, agriculture and surrounding of agriculture university. 3 नर्सरीज जो है वो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट की, देन उसके बाद जो है वो 38 नर्सरीज जो है वो हमारे हैदराबाद में जो इन पर ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर जो है करती है, मैंने वहां से डेटा जो है वो इसका सारा कलेक्ट किया है। तो इसलिए हैदराबाद की भी जितनी नर्सरीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड है और प्लस में जो है एग्रीकल्चर भी जो है वो इसमें इंक्लूड है, क्योंकि कुछ ऑर्नामेंटल्स और कमर्शियली जो है हमारे पास एग्रीकल्चर में भी इस पे काम होता है। So you can differentiate based on methods. Yes. I isolated from Alternaria alternata and उसके साथ ही जो है आपने देखा कि कुछ और कॉलोनीज भी जो थी वो ग्रो थी, लेकिन हाईएस्टली जो इन्फेक्टेड था वो Alternaria alternata था 32.77% जो वो हाईली इन्फेक्टेड था उसके साथ। नो जस्ट ओनली आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्नामेंटल्स को जो है वो हम निग्लेक्ट करते हैं, हम जो है वो इस पे काम नहीं करते। तो एक्चुअली जो मेरा रिसर्च वर्क था या मतलब जो हमारी थिंकिंग की सुपरवाइजर कमेटी हमारी कि हम इस पे डॉक्यूमेंटेशन बनाए, एक ऑर्नामेंटल्स पे एक कलेक्शन बनाए। तो हमने 38 प्लांट्स को जो है वो कलेक्ट किया और उस पर एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन बनाई। देन उसमें से फिर हमने 10 प्लांट्स लिए और फर्दर उस पर जो है वो काम किया और उसकी आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन की। तो ये एक जस्ट लिटिल बिट पार्ट था मेरी मास्टर रिसर्च वर्क का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। हमारे जो सर्फेस होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस दे आर सिस्टमैटिक, सो हमें को सिस्टमैटिक करने की जरूरत है ताकि हम उसके एक्चुअल ट्रू पिक्चर ऑफ सिस्टम व्हाट इज एक्चुअली इशू, व्हाट इज द आंसर, एक्चुअली जो मैंने आपको पिक्चर शो की वो मेरी रियल पिक्चर है जो मैंने सर्वे किया, और इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम होगा तो मैं अपनी थीसिस आपसे शेयर करूंगी, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन पर है, क्योंकि आपने मेरा टाइटल देखा कि आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्लस डॉक्यूमेंटेशन, तो हमने तो सारा काम ही डॉक्यूमेंटेशन पे किया। आप जितनी पिक्चर्स कहेंगे मैं शेयर कर लूंगी आपके साथ फील्ड की। एनी क्वेश्चन प्लीज? Yes, sir. Thank you.
वैल्यू एडिशन कल्चर। बिल्कुल। अल्टीमेटली बात ये है कि आप जितनी इंडस्ट्रीज आपकी यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर है वो भी कमर्शियल लाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप सोशली वर्क करोगे तो आप बहुत जल्दी जो है नई चीजें Inshallah, thank you so much, sir. Such a nice suggestion. Inshallah, I will note it. थैंक यू आयशा। थैंक यू आयशा। द नेक्स्ट स्पीकर हमारे पास है हाफिज मोहम्मद उसामा, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, कल्टिव एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। अब उनका टॉपिक है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ब्लू मोल्ड ऑफ सिट्रस। मेरा ख्याल है नहीं है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्पीकर है हुसनैन अब्बास है, डिपार्टमेंट प्लांट साइंसेज, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित बल्तिस्तान से। और उनका टॉपिक है मॉनिटरिंग ऑफ पोमीग्रेनेट फूड रॉट डिजीज इन डिस्ट्रिक्ट गिलगित पाकिस्तान एंड इन विट्रो मैनेजमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम है। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम है। मिसाले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। मेरा नाम हुसैन अब्बास है। मैं गिलगित बल्तिस्तान का स्टूडेंट। मेरा प्रेजेंटेशन टॉपिक जो है असेसमेंट एंड इन विट्रो कंट्रोल ऑफ पोमीग्रेनेट फ्रूट रॉट डिजीज इन गिलगित डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। सबसे पहले जो पोमीग्रेनेट ट्री जो है ये प्लांट इंडिजिनस टू ईरान, मसलन ये ईरान का नेटिव प्लांट है और अब ये वर्ल्ड वाइड कल्टिवेट की जाती हैं, पूरी दुनिया में कल्टिवेट की जाती है। और ख़ास तौर पर जो गिलगित बल्तिस्तान का रीजन जो है इसको समझना बहुत ही लाजमी है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस भी मद्देनज़र रखते हुए स्ट्रेटजीज जो है प्लान्स जो होती है इसको अपनाना चाहिए। तो गिलगित बल्तिस्तान की जो क्लाइमेटिक रीजन जो है वो ख़ास तौर पर ट्रॉपिकल रीजन नहीं है, वहाँ पे टेम्परेट जोन और इसके बाद अल्पाइन और सब अल्पाइन जोन है। और ये पोमीग्रेनेट जो है ख़ास तौर पर जो टेम्परेट रीजन जो है इसमें ज़्यादा जो कल्टिवेट की जाती हैं, क्योंकि ये एंडेमिक नहीं है, नेटिव नहीं है, इसको कल्टिवेट किया गया है, इंट्रोड्यूस की गई हैं। और इसका जो मेरा स्टडी जो था मेन जो था इसमें प्रेजेंट स्टडी देयरफॉर कंडक्टेड टू मॉनिटरिंग द मेजर फंगल पैथोजेंस रिस्पांसिबल फॉर पोमीग्रेनेट फ्रूट रॉट एंड टू एक्सप्लोर इन विट्रो मैनेजमेंट यूजिंग बायोलॉजिकल एंड केमिकल। इसमें जो डिजीज जो था फ्रूट रॉट वाला जो प्लांट्स जो है इसमें देखें कि जो शुरू में मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है इसमें 2018 से बिफोर, मसलन 2008 से लेके 15 तक जो हमारे पास ये पोमीग्रेनेट जो थे वो खराब नहीं हो रहे थे, जो डिजीज जो थे उसके ऊपर अटैक नहीं कर रही थी। और विद इन जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है 15 से ऑनवर्ड जो है जो प्लांट्स जिन्हें पोमीग्रेनेट जो है इसको हार्वेस्ट किया जाता है, इसके बाद वो एकदम खराब हो जाती हैं। अब तो खैर इसमें बहुत सारे जो पोमीग्रेनेट है इसमें प्रिजर्वेशन वाली जो टेक्निक जो है तकरीबन ऑलमोस्ट फेल हो चुकी हैं, वो हार्वेस्ट से बिफोर ही खराब हो रही हैं।
तो हमें उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश की कि इसमें मेन रीजंस क्या थे बिहाइंड, इसको फाइंड आउट करें और इसकी सोल्यूशन की तरफ हम जाएं। अब ये फ्रूट रॉट जो है इसमें खास तौर पर एक डिजीज जो अटैक कर रहा था, इसमें जो देखना चाह रहे थे कि इसमें प्राइमरी काजल एजेंट क्या है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए केमिकल कंट्रोल भी हम देखेंगे लैब के अंदर, और साथ साथ इसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल भी देखेंगे, उनकी एफिकेसी जो है और फील्ड और लैब के अंदर कितनी थी और कैसी थी, इसको हमने देखना था। अब जो हमारा मटेरियल मेथड जो था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी डिफरेंट जो हमारे पास यानी वैली जो है ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से ज़्यादा हैं, हमने कलेक्ट की कि डिफरेंट वैलीज के अंदर विजिट करने के बाद इसमें हमने फील्ड जो है उससे भी हमने ली, और इसके बाद नर्सरी जो है उससे भी हमने ली। लेने के बाद ऑलमोस्ट जो हमारे पास सैंपल्स जो थे 180 प्लस जो सैंपल थे उनको हमने कलेक्ट करने के बाद फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर था, जो हमने मीडिया हमने लेने के बाद जो इन्फेक्टेड जो हमारे पास सैंपल थे ओमिग्रेनेट्स की, उसकी जो डिब्रीज जो हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड हो तो इसमें ऑलमोस्ट और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमने वॉश किया, वॉश करने के बाद पेट्री डिश के अंदर हमने उसकी ग्रोथ की, और जो हमारे पास मीडिया जो था पीडीए हमने बनाया, इसके अंदर एग्रोस के साथ और इसके अलावा हमारे पास डेक्सट्रोज और पोटैटोस इन्फ्यूजन हमने मिक्स की, और इसके बाद इसमें जर्मिनेशन वाला प्रोसेस जो थे, जो इन्फेक्शन जो थे वो उन लोगों ने ग्रोथ करना शुरू किया। अब ये इन्फेक्टेड के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर जो था, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर तो नहीं हो सकते, और भी हमारे पास फैक्टर हो सकते हैं, इसमें प्राइमरी काजल एजेंट हमने देखना चाह रहे थे। अब इसमें जो प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन की तरफ हम गए, इस प्रोसेस में जो हाइफी टिप्स जो थे इसमें पैथोजेंस ने ग्रो किया, और इसके बाद जो हमारे पास प्लांट जो था इसमें जो मेजर जो काजल एजेंट जो था, इसमें एस्पेरगेलस जो नाइग्रम जो था वो मोर डोमिनेंट था, वो रिस्पॉन्सिबल था कि पैथोजेंस जो थे या इन्फेक्टेड करवाने के लिए मोस्ट यानी डोमिनेंट थे। अब इसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल की अगर तरफ हम आए, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमारे पास एक एजेंट्स जो था, इसमें ख़ास तौर पर ट्राइकोडर्मा हेरिजियम, इसको हमने यूटिलाइज किया। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल जो लैब के अंदर हमने किया इन विट्रो मैनेजमेंट में, इसमें उसकी एफिकेसी जो थी बहुत ही बेहतर थी बायोलॉजिकल कंट्रोल वाला। लेकिन अगर इस बायोलॉजिकल कंट्रोल को प्रैक्टिकल जो फील्ड के अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया, तो इसमें जो रिजल्ट्स थे लैब के अंदर वो इतने नजर नहीं आते, लेकिन नहीं पता इसके जो बिहाइंड क्या रीजंस हैं। लेकिन जहाँ तक की इंफॉर्मेशन जो है, जो मेरी नॉलेज जो है, इसमें फील्ड के अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल इतनी एफिकेसी नहीं है जितनी लैब के अंदर आप करें। तो लैब के अंदर खैर उसमें तकरीबन 60 से 70% जो थी इसमें कंट्रोल वाली पॉसिबिलिटीज थी कि एस्पेरगिलस नाइग्रम की इनहिबिशन करवा दें। और इसके बाद जो केमिकल कंट्रोल्स में दो केमिकल्स हमने ली, एक थियोफिनेट्स मिथाइल था और दूसरा टीबिकोनाजोल। अब इनको भी हमने ट्रायल्स पे रखा और हम देखना चाह रहे थे कि उनकी एफिकेसी क्या है। तो इसमें देखिए ये वाले जो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं ये बायोलॉजिकल कंट्रोल्स की हैं। आप जहाँ पे देखिए जो कंट्रोल ग्रुप हमने रखा 50% ग्रोथ जो थी वो नज़र आ रही थी। 18 जो हमने इस्तेमाल किया ट्राइकोडर्मा हेरिजियम्स, उसकी परसेंटेज ऑफ इनहिबिशन जो है लैब के अंदर 60% थी। और दूसरा जो रिजल्ट जो है केमिकल कंट्रोल में टीबिकोनाजोल्स और उसमें हमने देखा कंट्रोल्स, और इसके बाद हमने यानी फंगिसाइड का इस्तेमाल किया टीबिकोनाजोल्स का। और इनहिबिशन वाली जो हमने जो डेज थे 3 डेज 5 डेज 7 डेज, उसमें रिजल्ट्स जो ऑलमोस्ट जो थे इक्वल, या होना तो ये चाहिए था 3 डेज के बाद 7 डेज में
ज़्यादा कंट्रोल हो, लेकिन जो इसकी कंट्रोलिंग रेट जो थी फ्लक्चुएट होती थी अप एंड डाउन्स। और दूसरा जो है थियोफेनेट्स मिथाइल का भी हमने देखा, तो इसमें कंट्रोल और इसके बाद इनहिबिशन वाला है, इसमें भी इनहिबिशन रेट जो है 50% ऑलमोस्ट जो हमारे कंट्रीब्यूशन है इसमें एस्पेरेगस नाइग्रम जो है इसमें कंट्रोलिंग वाली एफिकेसी इसके अंदर भी पाई जाती है। अब ये वाला जो हमारे पास डिस्कशन जो वी कंडक्ट द फर्स्ट स्टडी ऑन द मॉनिटरिंग प्री हार्वेस्ट रूट ऑफ पोमीग्रेनेट काज्ड बाय एस्पेरेगस नाइग्रम इन द गिलगित बल्टिस्तान। जो पोमीग्रेनेट जो है इसमें प्राइमरी रूट काजल एजेंट्स जो है एस्पेरेगस नाइग्रम है, और इसमें जो अवर रिसर्च में भी सिग्निफिकेंस implication for the enhancing fruit productivity and health in the study area. Moreover, it can provide base further investigation on the pre-harvest monitoring of pomegranate rot. We test the antifungal activities of the tibuconazoles, thiophenates methyl on pomegranate is effective on the fungus. Both fungicides effectively inhibit the fungal growth in the treatment of groups compared to the control group, indicating that the control disease. However, the effectiveness of fungicide decrease over time, show by increase the fungal growth in the treatment group of 7 compared to 3. The decreased effectiveness is due to the various factors such as the degradation of fungicides, emergency resistance, fungal strength, growth on pathogen by infected fruits. Further, more study need to identify the factor affecting the effectiveness and development strategy outcome. दूसरी बात जो पब्लिकेशन रिपोर्ट्स में हाउएवर जो खास तौर पर गिलगित बल्टिस्तान के अंदर पहले जो पोमीग्रेनेट्स के ऊपर मेरे ख्याल में काम नहीं हुआ था, क्योंकि जो बेस ये वाली जो हमने थोड़ी सी कोशिश की है बेस लाइन स्टडी की, क्योंकि ऑलरेडी इस तरह के जो पब्लिकेशन जो थे हमारे पास नज़र नहीं आ रहे थे, तो हमने कोशिश किया कि इसको फाइंड आउट करें। तो इसमें मेरे ख्याल में और भी हमारे पास फैक्टर्स है, एक तो जियोग्राफिकल मैंने कहा लोकेशन का भी हो सकता है। तीसरी बात जो इसमें मेन काजल जो है हो रहे थे, पहले मैंने कहा कि शुरू में पॉइंट आउट किया था कि 2008 से बिफोर जो है मेरी ऑब्जर्वेशन रही 15 तक इसमें इतने खराब नहीं हो रहे थे, 18 आफ्टर हो गए। इसमें मेन चीज जो है मेरे ख्याल में इसमें केमिकल्स वगैरह जो है ज्यादा इस्तेमाल की गए हैं फर्टिलाइजर को इन्हांस करवाने के लिए। शायद केमिकल्स की वजह से सॉइल फर्टिलिटी जो है या सॉइल टेक्सचर जो है वो खराब हुआ हो, जिसमें ये पैथोजेंस और इंसेक्ट जो है इसमें अटैक करने की बहुत ही पॉसिबिलिटीज रही। और इसके अलावा क्लाइमेटिक चेंजिंग्स 2000 यानी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है सडनली चेंज हो रहे हैं, जिसके नतीजे में फंगल अटैक्स इंसेक्ट वगैरह जो है उसके अटैक मोर पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक्स फॉर योर लिसनिंग। अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो पार्टिसिपेंट्स के रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शॉर्ट करें। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड। What is climate condition of Pakistan? What is I need to say that relative देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन मसलन गिलगित बल्टिस्तान के मैंने पहले ही कहा कि ट्रॉपिकल एरिया जो है यानी मतलब ये टेम्परेट रीजन जो है वो फॉल कर रहा है। पर्टिकुलरली मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है मसलन पहले जो सर्दियों में मसलन बर्फबारी हो रही थी, ऑलमोस्ट 2016 में एक दफा हुई थी और इसके बाद ऑलमोस्ट अभी तक नहीं हो रही है सर्दियों में। जो हम रिडक्शन कर रहे हैं इसके हट के जो गर्मी हो रही है और इससे हट के जो है सर्दी हो रही है। 2017 के अंदर मैंने आपने विजिट किया होगा और जो मोस्ट ऑफ आप बाजार में जाते हैं तो आपको फटे हुए अनाज बिल्कुल 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 मैंने भी खुद इसके ऊपर काम किया हुआ है और जो मैंने बाकायदा रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दी थी वो कॉम्प्रिहेंसिव लाइट डिजीज का टील लाइट है और अस्पताल स्टील उसमें पाया जाता था। लेकिन जो मैक्सिमम इंटेंसिटी थी वो टील है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरह का है बिल्कुल क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है और कूलिंग है, इसकी वजह से वो बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा फील होता है। अस्पताल नाइट्रोजन भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है जितना बैक्टीरिया में होता है।
एक दूसरा विस्तार ना ये इसमें नोट पॉइंट आउट पहले ही करना था। देखिए पोमीग्रेनेट्स जो है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डिफरेंट तरह की वैरायटीज हैं। अगर आपने की है तो इसमें आप ऑब्जर्वेशन रही होगी। एक शोर वाले हैं, फिर इसके बाद एक दूसरा जो हम दुमदुनी कहते हैं, तीसरे स्वीट जो लोकली हम ये इसाकुली कहते हैं। ज्यादातर इन्फेक्शन जो होती हैं बाकी अदर वन इसाकुली के अंदर जो है स्वीट जो पोमीग्रेनेट है उसके अंदर ज्यादा होती है। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताई है कि अभी भी आप किसी भी मुकाबला जो करना जहां से भी आपको ये सिक्योरिटी वाले स्कीम वाले आपको कॉम्पोनेंट मिलेंगे, आप आइसोलेट करके में क्लियर कीजिए। दूसरी बात ना सर, एक अक्षर में स्टूडेंट हूँ, आप टीचर्स प्रोफेसर्स भी हैं। दूसरी ये बात मैं ये कहना बेहतर समझता हूँ। मसलन खास तौर पर गिलगित सिटी जो है, गिलगित सिटी है, फिर इसके बाद जो साइड में जो है दनियोर है, जलालाबाद है और नगीर वाला, इसमें एग्रीकल्चर वालों ने शुरू में जो काम कर रहे थे कि मसलन केमिकल्स वगैरह जो थे उन लोगों ने रिकमेंड किया कि इस्तेमाल करें, आपकी यील्ड जो है वो बेहतर होगी। तो उन एरिया में जो ज्यादा इन्फेक्शन जो होती है ना उन एरिया में ज्यादा पाई जाती है। अब इससे जो बैकवर्ड जो सिटीज जो है माजरत बैकवर्ड जो वैलीज जो है उसके अंदर इन्फेक्शन वाली जो है पोमीग्रेनेट्स बनिस्बत गिलगित और उन कंपेरिजन में वहां पे अच्छे हैं, अब भी खराब नहीं हो रही है, दो सिटीज वहां पे हैं। तो मींस केमिकल और फर्टिलाइजर यानी केमिकल्स और फर्टिलाइजर की यूसेज की वजह से भी ना इन्फेक्शन वगैरह जो होगी वो लीड होगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि शायद इसमें सॉइल टेक्सचर जो है वो खराब हो गया हो। साइड टेक्सचर से तो होगी, सॉइल टेक्सचर साइड बहुत लोग का मैं मान लूं कि उसमें है ही मसला। Thank you very much. तो टाइम कम होने की वजह से वो हो गया है। और किसी को क्वेश्चन है? वालेकुम अस्सलाम। Mode of action of trichoderma hardia you have evaluated in different conditions. क्योंकि देखिए क्यों रिसर्च वाले जो है ना फील्ड नॉन स्टॉप है, फर्दर भी हम जो बायोलॉजिकल कंट्रोल वाले जो है ना फंगिसाइड हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं। मसलन डिफरेंट तरह के जो प्लांट्स जो है इसको यूटिलाइज करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिजीज जो है उसके खिलाफ कितनी रेजिस्टेंस भी कर रही हैं। इन प्रोसेस जो है इस टाइम जो हमारा जो ट्रायल्स चल रहे हैं हमारी लैब के अंदर गिलगित में, तो इंशाल्लाह उस तरह के और भी जो प्लांट्स जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ हम जा रहे हैं। रही बात बायोलॉजिकल कंट्रोल इन विट्रो में हमने कोशिश की लैब के अंदर ट्राइकोडर्मा की, तो इसमें एफिकेसी जो है ना बहुत बेहतरीन है लैब के अंदर, लेकिन इसको प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाके हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इतनी जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, मींस अब भी खराब हो रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है ट्राइकोडर्मा बायोलॉजी जो आपने यूज की? तो मोड ऑफ एक्शन की बात कर रहे हो, दोबारा रिपीट करें इसको, थोड़ा एलिबरेट कर लें। लेके जाते हैं तो बाकी उसकी एफिकेसी एनवायरमेंटल कंडीशन में डिपेंड करती है, वो अपने रिजल्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करती। बिल्कुल सर। लेकिन इन केस दो चीजें हैं, या तो आप उसके नैनो पार्टिकल डेवलप कर दें या फिर आप उसके मेटाबोलाइट्स करें। अगर आप मेटाबोलाइट्स लेंगे कोई एनवायरमेंटल फैक्टर का उतना इंपैक्ट नहीं होगा जैसे ट्राइकोडर्मा हार्डियम के बराबर, या फिर उसके नैनो पार्टिकल भी आप डेवलप कर सकते हैं जैसे दुनिया काम कर रही है, आप उसको कर सकते हैं और उससे नैनो पार्टिकल लेके आप उसको अगर अप्लाई करते हैं तो ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो ट्राइकोडर्मा हार्डियम है मोस्टली जो साइड ऑफ द डिजीज है उनके लिए तरह है। सही। थैंक यू वेरी मच। मेरी गुजारिश है कि जो भी प्रेजेंटर है थोड़ा टाइम को देखें, टाइम को हम जो है बहुत ही पीछे जा रहे हैं। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर हदीब अहमद, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, पाकिस्तान, of factors in nanoparticle against pathogens, microfauna, phylogena, and period of species.
Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. First of all, I'm thankful to the Pakistan Phytopathological Society for arrange this beautiful and very much appreciable environment for all the scientists from all over Pakistan and also from the world. Yes, sir. मैं सिर्फ इसीलिए तमहीद बांध रहा हूँ कि ये तब तक आ गया. Okay. Thank you. Okay. Mike. Okay. The topic of my presentation is the potential biocontrol efficacy of neem leaf-based green synthesized zinc and silver nanoparticles against citrus gymnosis caused by the Phytophthora nicotiana. Is it not working? Then about the introduction of the crop, citrus. Citrus belongs to the family Rutaceae. It's the second largest fruit crop across the country. If you talk about its nutritional value, it's the source of different vitamin, minerals, dietary fibers, and carbohydrates, etc. Citrus belongs to the native area of South Asia, East Asia, Southeast Asia, Melanesia, and Australia. If we talk about its production and the cultivated area, it's the production worldwide is 161.8 million tons from the worldwide, and well in Pakistan it's 2.32 million tons. Cultivated area that belongs worldwide is 10.22 million hectares, while in Pakistan it is 0.199 million hectares. There is some graphical map representation of the production of citrus along throughout the Pakistan, especially the three provinces of Pakistan, Punjab, Sindh and KPK. Some of the cities mentioned here for Punjab, Sargodha mainly leading. Punjab 95% constitute करता है हमारी citrus production का, तो इसलिए इसमें ज़्यादा cities mention है. अदर बाकी 5% में हमारी बाकी countries, provinces इसमें participate करते हैं इसकी production में. पंजाब में सरगोदा सबसे लीडिंग भरवाल का एरिया, अदर देन दिस डोबा, मंडी भाउद्दीन, साहिवाल, खानेवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, और उसके बाद सिंध में नवाबशाह और नौशेरो फिरोज फ्रॉम द केपीके. सम ऑफ द सिटीज एरियाज मेंशन्ड आर स्वात, डीआई खान, मालाकंड, हरीपुर एंड मर्दान. Okay, about the diseases of citrus. One of the major disease that I am going to work is highlighted here, citrus gymnosis, caused by the Phytophthora species, and some other species of also reported for as a causal agent of the disease of citrus gymnosis. Some important other diseases of citrus that are causing economical losses are mentioned here as citrus scab, citrus melanose, citrus canker, citrus greening, along with their causal agents mentioned here. Citrus gymnosis, that is a formidable challenge to citrus industry among above mentioned diseases. Okay, if we talk about the symptoms of the disease, among their symptoms, there are mentioned too many symptoms. Some of the major symptoms for the citrus gymnosis. Gymnosis, as its name's mentioning that production of gum is its main symptom, और इसकी जो bark splitting, bark का split करना और उसके अंदर से gum production. और अगर इसका अंडरग्राउंड सिम्टम की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम इसके रूट्स, फीडिंग रूट्स, अगर हम इसकी जस्ट मैं एंड पे आपको थोड़ी बहुत पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी इसमें है, हमारे पास पिक्चर्स ऐड हैं. हम इसकी रूट्स को जब डिग आउट करते हैं, उसकी रूट्स के अंदर से रूट्स की रॉटनिंग, गली सड़ी रूट्स, और उनकी थोड़ी सी जाहिर बात है वो गलने सड़ने की वजह से उनमें स्मेल का भी एक अंसर है और वो आपको ब्लैकिश नजर आएंगी. ये इसके मेन सिम्टम्स हैं. बाकी okay, as I'm going to manage this disease by using nanoparticles, so the nanotechnology that is mentioned here is emerging emerging field of study in plant disease management. Nanoparticles, उनका mode of action क्या है? They kill pathogen by the quick action, that is cell lysis basically. Some of the nanoparticles that are being used in the plant disease management are mentioned here: copper, silver, zinc, selenium, titanium, silicon. ये इम्पोर्टेंट जो कुछ नैनो पार्टिकल्स हैं जो ओवरऑल इस्तेमाल किए जा रहे हैं प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के अंदर. और जो चूंकि मैं नीम लीफ बेस यूज कर रहा हूँ, तो मैंने वो भी मेंशन किया कि उसमें कुछ मेन एक्टिव कंपाउंड्स हैं
आज़ादी रिएक्टर उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है निम्बिसिन और दूसरे भी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं. Okay, well, we come to the objective of our work is that the management of citrus glosses caused by the Phytophthora nicotiana by using nanoparticles, green synthesized silver and zinc nanoparticles. How I prepared them, I have just shown some steps, major steps for the preparation of my nanoparticles by using 20 gram, adding 20 gram of neem powder added in the first step. From the very first top, neem 20 gram neem powder को हमने add किया 100 ml methanol के अंदर और उसको incubate किया overnight. After that we place it on the magnetic stirrer for the 30 minutes. Magnetic stirrer उसमें उसको ज़ाहिर बात है उसको mix करने के लिए, उसके बाद उसको filter करेंगे. जो filtrate हमें हासिल होगा उसके अंदर हमने 17 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर नैनोपार्टिकल्स. और अगर हमें जिंक के बनाना है तो हम उसमें 15 ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं. और आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्लेस इट ओवर द फर्नेस ओवरनाइट फॉर 80 डिग्री सी टेम्परेचर, सॉरी एट 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द 24 आवर्स. ये इसका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करने के लिए है. और उसके बाद हम इसको पेसिलन मोटर में मजीद फाइन पाउडर फॉर्म में लाने के लिए इसको पेसिलन मोटर में मजीद ग्राइंड करेंगे. ये मैंने जो अपने नैनो पार्टिकल्स बनाए थे मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं. ये हमारे पास ये जो ब्राउन कलर में है ये जिंक नैनो पार्टिकल्स हैं और इससे नीचे जो ब्लैक और चारकोल कलर में थोड़े से डार्क कलर के हैं ये हमारे पास सिल्वर नैनो पार्टिकल्स हैं. Okay, while coming to the experiment, our zinc or silver nanoparticles were evaluated under the lab conditions by using three concentrations 0.25, 0.5 and 1% of the concentration by using three applications. Its design was CRD. Poison food technique was used for the experiment. Also, data was recorded at 24 hours, 48 hours, and 72 hours of the time interval. Okay, results में हमारे पास जो first आ रहा है ग्राफ में graphical representation है results की. Mycelial growth inhibition of Phytophthora nicotiana induced by various nanoparticles. मेरा इसमें definitely जो mixture है उसमें mycelial growth को control करने के लिए silver और zinc nanoparticles सबसे इसमें जो combination था उनका वो ज़्यादा effective रहा. और उसके बाद zinc oxide and then silver control definitely control group की हमारे पास जो mycelial growth है वो ज़्यादा थी सबसे, वो control चूँकि हुआ ही नहीं था. Okay, well, next is the assessment of nanoparticles duration on the basis of 3 days. Basically, days interval है कि इसमें हमने 24 hours, 48 hours और 72 hours के intervals में हमने जो इसकी mycelial growth को हमने शो किया. उसमें भी zinc oxide और silver nanoparticles के combination ने हमारी जो growth inhibition है उसमें mycelial growth को control किया. और उसके बाद फिर zinc oxide and then silver और last पे definitely control group है. ओके, और द रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उनके कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर और जिंक नैनो पार्टिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन कम्बिनेशन में अप्लाई की गई है इसमें भी सेम वही फिनोमिना है कि जिंक और सिल्वर दोनों नैनो पार्टिकल के कम्बिनेशन ने हमारी ग्रोथ को ज़्यादा माइसीलियल ग्रोथ को इनहिबिट किया है इन विट्रो कंडीशंस के अंदर. फिर जिंक ऑक्साइड और सिल्वर एट द एंड डेफिनेटली कंट्रोल ग्रुप. ओके, इन विवो एक्सपेरिमेंट के अंदर सिल्वर जिंक नैनो पार्टिकल्स इन विवो कंडीशन में जब अप्लाई किए गए इनकी 3 एप्लीकेशन आरसीबीटी डिजाइन के साथ 7, 14 और 21 डेज इंटरवल पर हमने इनको चेक किया. परसेंटेज ऑफ इंसिडेंस इनहिबिशन ऑफ सिट्रस गिमोसिस इंड्यूस्ड बाय द वेरियस नैनो पार्टिकल्स इन विवो कंडीशंस. इसमें भी अल्टीमेटली हमारे पास जितने भी एक्सपेरिमेंट्स में किए कम्बिनेशन ने सबसे बेस्ट रिजल्ट हमें जो है वो शो किया. सिल्वर और जिंक नैनो पार्टिकल्स की ग्रोथ में सबसे कम है, उसके बाद जिंक साइड की से थोड़ी ज़्यादा है और सिल्वर की ज़्यादा माइसीलियल ग्रोथ आ रही है. एट द एंड कंट्रोल ग्रुप सबसे ज़्यादा उसमें हमारे पास ग्रोथ रेट शो कर रहे हैं. और लास्ट नॉट लीस्ट असेसमेंट ऑफ वेरियस नैनोपार्टिकल्स ड्यूरेशन ऑन इंसिडेंस ऑफ सिट्रस गिमोसिस. डिजीज इंसिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास सिल्वर और जिंक नैनोपार्टिकल्स के कम्बिनेशन में सबसे कम डिजीज इंसिडेंस है, फिर जिंक में और सिल्वर में और लास्ट पे कंट्रोल ग्रुप में है. Conclusions and the recommendations. Definitely on the basis of my experiment, I have concluded the results present. Study expressed that combination of neem leaf-based green synthesizing and silver nanoparticles are effective against Phytophthora nicotiana. While on the basis of these results, my recommendations are that nanoparticles can be recommended as the effective management tool against the citrus gimosis disease. While coming to the acknowledgement, I am very grateful to present my both of supervisors mentioned here, Dr. Nasir Ahmed Rajput and Dr. Muhammad Atiq. Dr. Nasir Rajput sir from the plant microbe interaction lab, my first supervisor, and my second supervisor, Dr. Muhammad Atiq from the citrus pathology lab. I am very much thankful to both of my mentors, my professors, for their always a very great support and guidance and inspiration for me. I am very much thankful to you, sir. Thank you very much. Next one, last one. Ye thodi si, sorry, just hold on for your clap file.
ये मैंने पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में आपको बताया था रूट्स के बारे में कि हमने ये आपको पिक्चर्स इस बात को डिस्क्राइब करी। हमने जो अपनी फाइटोप्थेरा की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा रूट जोन को कंसिडर किया है। रूट्स के अंदर मैंने अपने सिम्टम्स में आपको ये बात एक्सप्लेन की कि गली सड़ी रूट्स, वो फीडिंग रूट्स उसकी हैं, वो ब्लैकिश ग्रोथ, ब्लैकिश बेसिकली वो हुई होती हैं गलने सड़ने की वजह से, और उनको आप स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे अगर, तो उनमें से कुछ ज़्यादा स्मेल भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा क्लियरली ये जस्ट मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हम इसको काउंट कर सकते हैं। नाउ आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज। वालेकुम सलाम। नजर आए पहले प्लीज, खड़े हो जाएं अगर नजर आ जाएंगे। थैंक यू जी सर प्लीज। जी तो सिम्पटम्स सिरोसिस के अलावा क्या आपने किसी मरीज को मैनेज किया है जिसमें नैनो पार्टिकल्स के थ्रू या सिम्पटम्स सिरोसिस किया? बाय माई सेल्फ, मैं अकेला, क्योंकि अब हमारे पास लैब में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। हमारे पास नॉट ओनली ऑन लीफ, हमने डिफरेंट यूकलिप्टस मोरिंगा, हमने डिफरेंट लीव्स को ग्रीन बेस पे नैनो पार्टिकल्स को ट्राई किया है, और नॉट ओनली दीज टू नैनो पार्टिकल्स ओनली, डिफरेंट नैनो पार्टिकल्स में कॉपर भी शामिल है, जिसको हमने डिफरेंट मिक्सचर्स के साथ, कॉम्बिनेशंस के साथ डिफरेंट क्रॉप्स पर अप्लाई करवाया हमारी लैब में। मैंने नहीं, बाकी हमारे लैब फेलोज, कोलीग्स, पीएचडीज जो दूसरे भी हैं, वो इन पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम सर। I'm allowed to go? Okay, thank you very much. Okay, जी, please, sir, okay. Welcome. Definitely it is. What kind of methods you are using for the formation of the Nanoparticle formation. Yes, exactly. Once the nanoparticles are formed, how to confirm KC fails in the process of the formations of the सर इसकी कैरेक्टराइजेशन वगैरह के लिए सेम टाइम के लिए हमारे पास फैसिलिटीज थोड़ी, डेफिनेटली हर जगह पे तमाम फैसिलिटीज मौजूद नहीं हो सकती, कहीं पर होती हैं तो वेल एंड गुड है। हमारे पास इसकी सेम टाइम और कैरेक्टराइजेशन के लिए हम इसको अपनी यूनिवर्सिटी में और कुछ आउट ऑफ यूनिवर्सिटी भी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं उसकी कैरेक्टराइजेशन। और इसकी एप्लीकेशन उसी में इफेक्टिवली लॉजिस्टिक कैरेक्टराइजेशन टू सैंपल एक्सआरडी जी डेफिनेटली एफटीआईआर भी इसमें शामिल है सर। डेफिनेटली इट इज। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Devan, for such a nice presentation. Now I would like to invite Nimra Iqbal from Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture Sciences, University of Punjab, Lahore. She will discuss about micro encapsulation of eucalyptus globulus essential oil antifungal sachet against blue mold on peaches. I think the topic इनका और है। Assalamu alaikum. My topic of my presentation is antifungal activity of chitin nanoparticle against phytopathogen, Macrophyna faeciolina and species. My name is Nimra Iqbal. I am the student of Master in Punjab University, University of the Punjab, Lahore, Agriculture Department. The title of I want to describe why I have taken that this topic. We all know very well biotic stress caused by the fungal pathogenic fungal pathogen cause major food safety issues nowadays, where prices of everything is high. Disease management is already very difficult, and fungal pathogen now for causing notorious diseases. So, for in this regard, I can choose this topic. There is the supervisor from my all work is conducted under the supervision of Dr. Amna Sheikh, Department of Plant Pathology, University of the Punjab. Biotic stress fungal pathogen is a major food safety issue that impact on agriculture production. There is a
Among these, so far in this regard, about 80% of the disease by fungi, among fungi, Macrophyna physiolina is very well known, notorious phytopathogen, which can cause the seed and soil-borne disease, attack 700 species over more than 70 host species, which has recorded in Pakistan. It can survive very harsh condition, can survive very high temperature until 40 degrees Celsius, very low moisture level. It will produce very resistant and robust type of Saccharoscia, which can survive 2 to 10 years because it produces melanin pigment. It's aggressive in mycelial growth and wide host range. Among other species, Fusarium species in 170 subspecies and 29 varieties coexistent harmless in crop roots, soil-borne fungi causing global. It's very robust type because causing mildew diseases and often fail complexity of plant fungal pathogen interactions. In this regard, why we can choose this topic? Every scientist think positively in favor of the environment. This way, among many other options are available. Among these other options, chitosan is very regarded or sustainable and eco-friendly. It has a linear polysaccharide form. All animals easily produce. It's using many other industries like antifungal, antibacterial, pharmaceutical companies, tissue engineering, and mold healing, where are sustainable and eco-friendly molecules. Chitosan is agriculture new challenge managing plant disease, herbicide, insecticides, and other quality food products. Chitosan show toxicity and antifungal activity. So this regard, we can use first attack on the we can use chitosan. We can attack on the cell wall of fungi and leads to hydrolysis of peptidoglycan of the cell fungi and leakage of endocellular electrolysis cell death. First, on cells, first hydrolysis of peptidoglycan and leakage of intercellular constitution. Second one, enzyme disruption, and then metal chelation. Its mechanism. To assess antifungal potential, chitosan nanoparticle against Macrophyna and Fusarium. First synthesis, first I can prepare 1% of acetic acid solution, addition of the 0.3 gram of chitosan in powder form, addition of 1% sodium tripolyphosphate to the cross-linker as a user cross-linker, and then stirring for 24 hours. Then antifungal acids were checked to prepare the first prepare 2% malt extract agar to antifungal acids, and mixing with malt extract agar plate agar medium, the concentration like 0.03, 0.05, and so on. Pouring of malt extract agar amendment chitosan nanoparticle in fatty plates, then inoculate with the desired fungus. Then first when we make chitosan nanoparticle, then characterize through the UV visible spectrophotometric frontier, Fourier transfer, infrared, FTIR, and SEM. These are the procedure throughout my presentation. Characterization of chitosan nanoparticles are confirmed through this for characterization UV spectrophotometer, FTIR, and particle size analysis or XRD analysis. These are results show the confirmation of chitosan nanoparticles are confirmed. These results are antifungal assays show the morphological changes in fungus, growth changes in fungus, and biological biochemical changes in the fungus. First, microscopic changes in the Macrophyna phaseolina check the control through concentration concentration higher the growth of the fungus is lower. Then antifungal acids macroscopic changes in the Fusarium species are also checked.
In this regard, Microfina physiolina microscopic characteristics are shown. First, control show the robust type of sclerotia. Then, when concentration of chitin nanoparticle increase, it's loosely attached and hyphae are also colorless. Then the microscopic characteristics of fusarium species. Fusarium first control is very control shows the very high concentration of microscopic observation, conidial small clusters, cylindrical branched hyphae, and then and other last concentration shows the hyphal sphalic and discolored. This table also shows the concentration 0 shows the 100% growth of the Microfina physiolina, and the last 0.026 concentration shows the 100% inhibition of the growth of fungus. In this table show morphological characteristics of Microfina physiolina 20 after 21 days shows first 0 concentration shows dark brown and black colors of globules, lightly packed sclerotia. On the other hand, 0.24 concentration absent of the sclerotia, and hyphae also thin and distorted or discolored fragments. This enzyme activity, biochemical activity is also checked by the physiological tests like catalase, peroxidase, phenolic oxide. First, it can increase gradually, then also it decreased to stop the concentration, to stop the growth of fungus. This data shows the concentration of Microfina physiolina biochemical changes, and this table graph shows the concentration of Fusarium species. Conclusion of my studies is chitin nanoparticle 0.24 concentration reduction of the growth of the fungus and the alteration of fungal morphology, and active antioxidant activities are increased, the stop of the growth of the fungal concentration, and it can be used for sustainable agriculture management. Future prospects in this interference of chitin nanoparticle physiological or other growth process of Microfina and Fusarium species could affect the interaction level of conducted confirmed in planta. Trials should be conducted to confirm disease management potential in future. Thank you so much. Any question? A very comprehensive but complicated presentation. Thank you, sir. तो बहुत जबरदस्त ये माइक्रोफ्लोमिना फेलुरिना इफेक्ट ये बहुत प्रॉब्लम है Yes, sir. हमारी स्पेशली मेल्स में 80%. so if anyone have any question किसी का कोई क्वेश्चन हो टाइम कम है Thank you, sir. Thank you so much. नो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये हमारे उसवा फातिमा डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर से he will discuss about green loaded chitin nanocomposites as potential antifungal weapon against root diseases in Vigna radiata. ओके ना चल ले और भी एक एक कर ले टाइम में उसवा फातिमा प्लीज जो है नहीं एक Assalamu alaikum. I'm Uswa Fatima. I'm a master student of from University of the Punjab. Here I'm here to discuss my research, which is on zinc-coated chitin in nanocomposites as potential antifungal weapon against root rot disease in Vigna radiata. My research was done under the great supervision of Dr. Amna Shoaib in Environmental Plant Pathology Lab, Department of Plant Pathology, University of the Punjab. Why I chose Vigna radiata, which is locally called as mung bean. It is the legume plant of the pea family, and it is widely cultivated in Asia. It is grown for its edible seeds and young sprouts. It contains high nutritional value. It is excellent source of potassium, protein, and copper, and it is cholesterol-free food. One cup serving of mung beans provides 80% of daily folate needs.
It is also used as medicinal. It also contains medicinal value. It is also used as cancer and anti-inflammatory agent. It is also very important crop for as a in point of view of agriculture. It is used. It forms symbiotic association with rhizobia, which enables it to fix an atmospheric nitrogen. It provides biomass and nitrogen to the soil. Macrophamina fazulina is a robust pathogen. It has almost 500 holes of 67 economically important plant species in Pakistan. It causes root rot disease in mung bean, and its sclerotia overwinters over 15 years under a high temperature of 40 degrees C. Its management strategies include agronomic practices, chemical control, biological control, genetic resistance. हम इन प्रैक्टिसेस को नहीं यूज करते क्योंकि ये हमारे पास जो इनोकुलम है उसको रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन उसको कम्प्लीटली खत्म नहीं करते हैं, इसलिए हम इन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर नहीं रह सकते और इसके लिए हम फर्दर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम माइक्रोफोमिना को कंट्रोल कर सकें, जो कि हमारे पास पाकिस्तान की इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स को जो है वो बहुत ज़्यादा लॉसेस क्रिएट करता है। इसके बाद जिंक, व्हाई आई चूज जिंक? Zinc is essential for all types of plants. It contributes in metabolic pathways and regulate protein and starch synthesis. Chitosan is a natural aminopolysaccharide, and it is non-toxic, non-biocompatible, and biodegradable. And it is also used as antimicrobial agent and promise for sustainable and eco-friendly control of pathogens. Nanotechnology is an emerging branch of science. It is of great interest these days, extensively being used in agriculture to help achieve the desired goals at low doses. And loading of metal on chitosan nanoparticles increases its antimicrobial action. It is also act as plant growth promoter and plant protection agent. The objectives of my studies are the formation of the chitosan nanocomposites and checking their antifungal potential against root rot disease in Vigna radiata. My first experiment is the synthesis of chitosan nanoparticles. The synthesis was done by ionic chelation method. The chitosan is dissolved in acetic acid, which is followed by the addition of zinc sulfate and a cross-linking agent, sodium tripolyphosphate. Their formation was confirmed by UV visible spectroscopy, X-ray diffraction, Fourier transform, infrared spectroscopy, and particle size analysis. This is a graph for UV visible spectroscopy and XRD diffractogram of the chitosan nanoparticles and FTIR and particle size analysis. By comparing these results with the literature, we confirm the formation of chitosan nanoparticles. My second experiment is the procurement of the culture and experimental setups. The culture was obtained from environmental plant pathology lab and subcultured on 2% malt extract. Experimental setup was done by using food poisoning techniques. 4 treatments are used, and the experimental setup was in triplicates, and the conditions provided are 30 degrees C and for 7 days. Growth and inhibition percent was recorded after 1 week of incubation. The in vitro experimental setup was done by using 8 treatments, in which we used negative control with no pathogen and positive control with pathogen. And 2 fungicides are used to compare the results of fungicides and over chitosan nanoparticles. Backbencher, please. In vitro. Backbenchers, please, आप खामोश हो जाएं अगर सुनना है, ठीक ही तो बातें ना करें, kindly interfere ना करें. Backbenchers. Okay, madam. Carry on. इन विट्रो ऐसे के रिजल्ट्स में हमने उसकी मोर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑब्जर्व किए थे, ग्रोथ चेंजेस ऑब्जर्व किए, बायोकेमिकल चेंजेस देखे और रिमेनिंग मैटर FTIR एंड सेम ऑफ फंगस वाज परफॉर्म्ड. इन विवो में ग्रोथ चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस वाज ऑब्जर्व्ड. Here in this slide, you can see the clear decrease in the growth of the fungus from control to the 0.11% of the chitosan nanoparticles.
In microscopic view, you can see in control there is a compact sclerotia and clear hyphae. But as the concentration increases, the hyphae loses the cluster form and becomes irregular, and hyphae become discolored. This table shows the difference between the in growth, in vision, and tolerance index as the concentration increases. And this is the graph for the growth of the fungus in vitro experiments. The statistical analysis was used to confirm the authenticity of our results. This table shows the difference in the hyphae colony and sclerotia as the concentration increases at 0.11%. The colony becomes feathery and white, and hyphae becomes light brown and discolored and fragmented, and sclerotia also becomes brown, irregular, and in loose clusters. And at 0.15%, there is no growth of the fungus in the plates. This is the same analysis of the fungus in the plates, and in this you can really see the sclerotia loses its compactness. This graph shows the zinc uptake efficiency of the fungus. As the concentration increases, the efficiency of the fungus decreases. FTI analysis was used to confirm the changes in the carbohydrate, lipid, and protein regions of the fungus, which is decreases as the concentration increases. The enzyme activity of fungus if first increases, then when chitosan nanoparticles are provided, but as the time passed, their activity decreases. In vivo growth changes observed by comparing their root length, root weight, shoot weight. In vivo physiological assays was also done to confirm the changes in the enzyme activities in the plant. My research was summed up as the synthesis of nanoparticles was done and confirmed by IUB, XRD, and FTIR analysis. The growth, reproduction, enzyme activity, and metal accumulation of Microphyllina fasciculata were sensitive to high zinc CHNP concentration. At 0.15% zinc CHNP, the development of fungus was stopped 100%, so zinc chitosan nanoparticles can be used to control the disease caused by Microphyllina fasciculata. In plantar assays indicated that zinc chitosan nanoparticles significantly managed charcoal rot disease and improved the plant growth. Zinc chitosan nanoparticles could offer a more sustainable and environmentally friendly option for managing disease than the chemical fungicides. The future prospects of my study is field trials should be conducted to confirm the disease management potential of zinc chitosan nanoparticles, and further field trials with other phytopathogenic fungi should be conducted for more profound and comprehensive interrogation of antifungal potential of zinc chitosan nanoparticles. Thank you. Any questions? So, any questions, please? Thank you very much, Usma. That was a very excellent presentation. लेकिन एक बात बताएं मुझे कि मैंने देखा है कि ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो प्रेजेंटेशन है आपकी वो माइक्रोफ्यूमिना फेजुलिना पे है, इसकी खास रीजन है या मेरा ख्याल है डॉक्टर सालिक साहब तो हैं, वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी माइक्रोफ्यूमिना फेजुलिना पे काम किया है, क्या इसकी वजह वो तो नहीं है? नहीं सर, वो नहीं है। ये बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करता है। पाकिस्तान में इसके बहुत ज्यादा होस्ट हैं और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लॉस कॉज करता है, और इसके होस्ट भी वो हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट हैं। इसलिए हम इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। That is the fact. Microphone is a problem. So thank you very much for such a nice presentation. तो अभी चूंकि थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल है टाइमिंग, हमारे सेक्रेटरी साउथ पंजाब भी इज ऑन वे, जो कुछ नाम जो है क्लास है अगर इनमें से मौजूद है कोई तो उनको चांस मिल सकता है। डॉक्टर हाफिज तसव्वुर अब्बास साहब हैं, मौजूद हैं? नहीं है।
तो डॉक्टर गुलशन इरशाद भी मेरा ख्याल में नहीं है। तो एनीवे, I'm thankful for all participants and all presenters. So now I would like to invite Dr. Sakir Nasir from PSF, sir, for conclusion of this session. Kindly come on the stage and conclude the session. Thank you very much, session chair and the co-chair. The whole session is very encouraging and very good. And basically the session title जो था वो basically था जी nature and the chemical pesticides. इसमें दो तीन चीजें ऐसी हैं जो मैं highlight करना चाहूँगा. Total हमारी जो इस session में presentations there are total 10 presentations are invited for the oral presentation, but 6 presenters are highlighting their studies for sharing their knowledge. One thing is very important. मैंने जो presentations देखी हैं उसमें more than 2 or 3 presentation is about the nanoparticles. My humble suggestion is that कि nanoparticles जो है it's like a kind of chemicals. ठीक है? तो एक चीज जहन में रखें कि हम जब टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं नेचुरल एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स, तो वी शुड बी मोर फोकस टू द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे हम बात करें या इस तरह के टॉपिक्स पे हम लेकर आए. दूसरा ये है कि जैसे सेशन चेयर ने खुद भी हाईलाइट किया कि जो प्लांट डिजीजेस हैं जिन क्रॉप्स में ज्यादा अकरेंस है, इंसिडेंस है, उन क्रॉप्स को अगर हम उन नैनो पार्टिकल्स के लिए इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव नीड टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट कि जिन क्रॉप्स में वो डिजीजेस हैं और वो नैनो पार्टिकल्स ज्यादा इफेक्टिवली यूटिलाइज की जा सकते हैं, उनके लिए हम इस्तेमाल करें. Overall, the presentations are very good, and ultimately that presentations give you an idea how to basically develop the sustainable management culture in agriculture. And I believe strongly about one thing, including the 5 E's in the slogan of the Ministry of Planning and Development. First E is the export push, and the export push is only possible with the best possible technologies and the methodologies are adopted for the agriculture productivity and to handle the problems of the plant pathogens in a systematic manner. Thank you very much. डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि आप ये देखें कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, जो उसके जो थ्रेट्स हैं उन्हें हमने ट्रेडिशनल चीजें की हैं, मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस की हैं, दो ट्रेडिशनल. अब नैनो पार्टिकल कर रहे हैं तो ठीक है, ये इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट आवर प्राइम फूड इज व्हीट. तो आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स कि आप लोग जो है व्हीट को कंसीडर करें, नैनो टेक्नोलॉजी को, जो व्हीट की डिजीजेज हैं, स्पेशली जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं, जैसे शुरू में मैंने आपसे बताया है, स्पेशली वी आर फेसिंग येलो रस्ट जो है वो बहुत डेंजरस है. उसके जो है हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड में रहता हूँ, आई एम फील्ड पर्सन. सर्विलेंस में मुझे 2 डिकेड हो गए इनके फील्ड सर्विलेंस करते हुए. तो ये इमर्जिंग थ्रेट है हमारी जो फूड सिक्योरिटी है. तो ये वीट है, हम जाहिर है इसके अलावा हमारे पास फूड का और कल्चर है नहीं. तो वी शुड सिक्योर आवर वीट. और नैनो जो टेक्नोलॉजी है, तो इट शुड पार्टिसिपेट फॉर सिक्योरिंग आवर फूड. तो थैंक यू वेरी मच. बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था. तो अब आई थिंक नियाज़ साहब बताएंगे कि नेक्स्ट जो है, आप कह रहे थे कि सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं. ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, मेरा नाम रहमान इजाज़ है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर. मेरा एक आपका क्वेश्चन है कि आप कह रहे हैं कि वीट के ऊपर आप अपनी रिसर्च वर्क को ज्यादा फोकस करेंगे, मगर इसके बरअक्स जब हम अपनी रिसर्च को प्लान करते हैं तो वीट को सिलेक्ट हम समटाइम्स करना चाह रहे होते हैं, मगर इसका लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को देखते हुए हम उसे छोड़ देते हैं. लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन मतलब ये 6 माह अब की क्रॉप है, तो उसकी बीच पर हम
एक वेजिटेबल एरिया जो हमें फ्रूट आइटम में अब देखिए ये लाइफ साइकिल एकेडमिकली ठीक है, एकेडमिक्स के हवाले से आपको डिग्री मिल जाएगी, बट व्हेन यू गो इनटू द फील्ड आपको वहाँ डिफरेंट सिनेरियो नजर आएगा। जाहिर है आप जहाँ भी जाएंगे आपने होटल पे जाना है, कहीं जर्नी पे जाना है, जहाँ भी जाना है आपने रोटी खानी है, आपने यहाँ वो मिक्स फूड कल्चर बिल्कुल नहीं है। ये बाकी ये है प्रॉब्लम कि हम वो क्रॉप सेलेक्ट करते हैं या वो चीजें करते हैं जो हमारे लिए शॉर्ट ड्यूरेशन हो, हमारी डिग्री उनमें कंप्लीट हो जाए। बट इन फैक्ट वी नीड टू वर्क ऑन आवर वीक। बिल्कुल इस पे कंसंट्रेट नहीं हो रहे लोग, स्टूडेंट नहीं हो रहे। आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, इसकी ड्यूरेशन को मत देखें, इस पे आप आए, क्योंकि हमारी जो फ्यूचर सिक्योरिटी है वो वीट से है। वीट इज अंडर एक्सट्रीम थ्रेट। मैं फिर आपसे कहता हूं कि ये हमारी फूड सिक्योरिटी है और अंडर एक्सट्रीम थ्रेट है। इस पे आप लोग आए, आप लोगों की बहुत जरूरत है। मैं हमेशा इस फोरम की तलाश में रहता हूं जहां पे हमारा फ्यूचर जो है, आप लोग हमारा फ्यूचर है, जहां आपसे इंटरेक्शन का मुझे मौका मिलता है। मेरी यही गुजारिश होती है कि आप लोग जो है इस साइड पे है, वेरी इंटरेस्टिंग वर्क, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस पे आए और कंट्रीब्यूट करें। आप चलिए हम अपने नेक्स्ट डॉक्टर तारिक साहब, कयूम साहब, हाँ जी कयूम साहब सेशन चल काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आए सेशन को चेयर करें, तो हमें जो है छुट्टी थैंक यू वेरी मच। Thank you, Lord. Sir, Salim sir, kindly out of the session. Thank you, sir. ये नहीं है, ठीक, ओके। लास्ट सेशन में बायोलॉजिकल वहाँ जो होना था, इसके बाद ये तो आउट है। वही था, करना था और नीचे तक कंप्लीट है, लोग हैं नीचे, इनसे चेक करो ना, ये हो रहा है अभी से शुरू, ये है और कौन इशरत जहाँ तो आई हुई, अगर वो कहाँ है यहाँ नहीं होगी, उसमें तो नहीं है। आप This session is on natural and chemical research and biological control. Our first speaker is Hamza Khan from Department of Plant Pathology, University of Agriculture, Hyderabad. The topic of the presentation is evolution of various neem products for anti-oomycete activity in controlling the epidemic of disease in papaya seedling caused by Pseudomonas apiicola. Hamza Khan. ये रहा मेरे कल बैठी हुई, इनको बताओ नहीं, ये रहा कल हो गई।
हाँ जी बिल्कुल इसमें निकाली मेरे कभी अब नाम बैठा हुआ है मुझे बात नहीं हो रहा है नहीं वो सीधा ये बोला ये In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Respected teachers, researchers, and dear fellows, Assalamu alaikum. Today we are here just for the one purpose. The purpose is that to produce or develop that technology which is helpful for the farmer communities, for our environment, and for our health. According to this aspect, my presentation topic is evaluation of various neem-based product for anti-mycete activities in controlling damping of disease in seedling papaya, which is caused by Pythium afenidermatum. These are my outline of my presentation, objectives, research background, experimental design, result, and conclusion. Objective: evaluation of various neem-based products under in vitro and in vivo condition for management of damping of disease papaya. Why I choose this topic? Because papaya is a very important fruit. It is very helpful for human because it prevents from anti-cancerous, from heart attack. These are the benefits in which many vitamins, minerals are present in papaya. But due to circumstances, its production are losses due to many disease attack. The one of the most important disease is Pythium afenidermatum. In simple word, we children say that कि अपनी बेटा base strong करो. Damping of disease is called at the base stage. So if we didn't manage this disease, it caused a huge loss in the country. But due to the quick response, the farmer and communities are bound to manage through the chemical fungicide. But fungicides have many drawbacks, like environmental pollution, human hazards. Like you are clearly seeing that our smoke is very nowadays, but water pollution is very. These are the fertilizers, chemical effects. So I managed through these strategies which are helpful for manage this disease, which are helpful for our environment and for our health. So these are the neem-based products. Why neem-based product I choose? That many compounds are present in the neem product, which are very, very helpful for antifungal, like nibidine, salalin. These are the compounds which actively control this disease. Experimental design. I designed two in vitro and in vivo. In vitro management of damping of disease papaya. I prepared 4 neem-based products and 1 purchased from the grocery store, which is neem oil. 4 neem products like neem seed with coat, neem seed without coat, neem leaf extract, and neem seed decoction. I each neem-based product crush and blend in 250 ml water and for the whole night, like 16 hours. Why I stayed hold the? Because it's clearly deep and clearly extract are present. So after apply these base product, I use target diffusion method, incubate at 28 degrees centigrade, and observe my cell growth, shoot, root length, and disease incidence. Result. You can clearly see that on the screen. The neem oil gave very significant result. Why neem oil? Because I purchased from the grocery store. In 9th class, we all students read topic malaria, which is clearly controlled by the quina. But due to the shortage of quina, the shopkeeper choose Syncona bar. These are dishonesty of that people. But his dishonesty proved blessing for the people who are the patient of the malaria. Like in case of me, I purchased from the grocery store neem oil. Maybe the grocery some add other compound which is for enhanced quality, enhanced color. But his dishonesty proved me a blessing and gave a significant impact between neem product and concentration. I use 3 concentration. 20, 30 and 40 ml in 100 ml PDA. At the highest concentration, clearly you can see that the control is very good.
And I also recorded data on the base of days. First day mycelial growth is very little bit as compared to other days in horse, and third is very fast. But the neem oil is all as compared to the other neem based product clearly control the growth of mycelium. In vivo management, because in vitro for our research, but we conclude to the former in vivo is must done. You can clearly say that impact of different neem product on disease incidence under in field condition. I applied the combination neem oil and neem leaf extract because in vitro experiment neem oil and after neem oil neem leaf extract is the best. So I applied the combination of these two products. I am clearly seeing that the neem oil and neem leaf extract control a good disease incidence. And I also recorded data at the week intervals. After 1 week and 2 weeks, the disease incidence is reduces. When I did this research, a question in my eyes, why disease incidence is reduced day by day? Basically, if we study that the disease incidence in horse, why? If the first day you count the lesion on other case, for example, 10 lesions, but very next day and next week when you count the lesion, maybe 3 or 4. Total lesion 13, but next day 2 lesions are in horse. In this case, the disease is reduced. But if we are count the overall, then the disease just must be not. I also like other experiment like shoot length and roll length. Punjabi एक common word है जिन्ना उत्ते है उन्ना थल्ले है. So we are clearly that how it is effect on the after applying the neem based product in the inoculated papaya seedling plants. So what is the effect of root length and shoot length? Impact of different neem products on shoot length of papaya seedling. I also recorded data when I applied that combination. It's a very clear. You can see that the shoot length is good, approximately 22 to 23 centimeter. But as compared to the control, only 6 centimeter after 3 days. After I recorded data on the week intervals, shoot weight 30 when I applied the neem based product with the combination. But as compared to the control, you can clearly say that 0.7, 0.8 gram the shoot weight. In the same case, the root length in the combination approximately 12 to 13 centimeter. 12 to 13 centimeter, but the control is the 5, 6, 7, 8 centimeter. Also root weight is 0.2 gram, but on the combination 1.6 gram. Conclusion and recommendation. The result is clearly shown that if you are properly prepared the neem-based product and farmer applied with a proper concentration, it's helpful for your manage this disease. And recommendation, I also farmer applied because once you go to the biological control, environmental is our nowadays very polluted due to the many pesticide, fertilizer, etc. And last one acknowledgement, no one before Allah Almighty, peace be Prophet, peace be upon him, and my parents, and my supervisor, Dr. Nasir Ahmed Rajput, and Dr. Muhammad Atiq. These are also guided me on every step, and my lab colleagues also support me in every step. Thank you so much. If you have any question, you can fill yes. Thank you so much. ये आपने परफॉर्म किया है एक्सपेरिमेंट मास्टर लेवल क्या था मॉइस्चर लेवल से ये इसको ज्यादा वेट हमने लाजमी किया था बिकॉज वहाँ पे अफजल भाई होते हैं फील्ड में उन्होंने कहा था ये वाटर लविंग पैथोजन है हमारे सुपरवाइजर ने बताया था इसको हर टाइम आपने पानी गर्मियों के दिन से 2-2 दफा भी हमने दिन में दिया ये ह्यूमिड प्रॉपर इसके अंदर पानी है नहीं किसी वो हमने कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं यूज किया कि इसमें ये कर सके अच्छा जी नेक्स्ट नेम that we have in the list but we don't know whether she is here or not Dr. Isha Jahan Ansari from University of Karachi always a long time.
last name is Dr. Asmani. So the session ended just after the start. And then not at that, ended. There's no speaker at all. So that was a nice presentation, only one presentation on papaya. But I would like to suggest that we should work on mature plants as well, because this pathogen can kill mature plants as well. And soil moisture is very critical. We should measure the soil moisture and then work on different stages of plant. Thank you. Go on. ओके, और तो कोई है नहीं, नहीं है तो बस वो नहीं होगी, सबको कॉल कर लिया। एक बार पानी बोल नहीं गुजारना। किसी जल्दी बुला रहा है। तो बताओ क्या करवाऊं। थोड़ा सा टाइम किल करना है, हमने तो पकड़ा के लिया है ये। किधर पाए जाते हैं? यहाँ यहीं इस सेशन पे कब पे होते हैं? Just one. ये लिखा हुआ है बस। Our next speaker is Mohammed Awais Farid. And online? This topic planned by security and effective way for plant disease management. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Awais Farid and I am student University of Sargodha. सबसे पहले मैं अपने टीचर्स डॉक्टर सर अहमद ज़ीशान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रेजेंटेशन में और एब्स्ट्रैक्ट में बहुत हेल्प की। और इट्स नॉट एन इजी टास्क यहाँ पर बोलना, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनके भी उस्ताद यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम तो एक आम से स्टूडेंट्स हैं, तो इतना इजी नहीं होता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट। कि माई टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन टॉपिक इज प्लांट बायोसिक्योरिटी एन इफेक्टिव वे फॉर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। बेसिकली मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा वो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्लांट क्वारंटीन के जरिए हम किस तरीके से डिजीज को मैनेज कर सकते हैं, बेसिक रूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। सो next slide. Just okay, so thank you. Outlines of my presentation is what is plant quarantine. Plant quarantine क्या है, उसके बाद types and methods of plant quarantine, procedure of plant quarantine, inspections, procedure and treatment of plant quarantine, or phytosanitary certificate, and at the end merits and demerits of plant quarantine.
सो प्लांट क्वारंटीन क्या है? क्वारंटीन बेसिकली हम यहाँ पे एग्जांपल कोविड-19 की लेते हैं, कोविड-19 की लेते हैं कि जिस तरह से क्वारंटीन मींस कि आइसोलेट करना, किसी चीज को आइसोलेशन में रख देना, तो प्लांट क्वारंटीन प्लांट्स को आइसोलेट करना जो दूसरी कंट्रीज से आ रहे हैं बेसिकली, उसको पहले एक प्रोसीजर के थ्रू गुजार के उसको आगे कंट्री में करना ताकि उसमें कोई डिजीज का अटैक बाकी ना रहे। Term quarantine derived from Latin word quarantum literally means put in isolation or isolation for 40 days. Definition is a legal restrictions on the movement of agricultural commodities for the purpose of exclusion, prevention or delay in establishment of plant pests and disease. Basically, there are three types of plant quarantine: domestic and local quarantine, national quarantine and foreign quarantine. डोमेस्टिक क्वारंटीन विद इन स्टेट, विद इन कंट्री, एक कंट्री में एक स्टेट में जो क्वारंटीन हो उसको डोमेस्टिक क्वारंटीन कहेंगे। और दूसरी जो है नेशनल क्वारंटीन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, जो क्वारंटीन लॉस जो होंगे अप्लाई होंगे, दैट इज नेशनल क्वारंटीन। और फॉरेन क्वारंटीन जो इंटरनेशनल एजेंसीज लाइक IPPC, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन या FAO जो है वो क्वारंटीन लॉज के थ्रू जो क्वारंटीन रेगुलेट करते हैं, दैट इज अ फॉरेन क्वारंटीन। नेक्स्ट प्लांट क्वारंटीन मेथड इज कंप्लीट एम्बार्गोस, पार्शियल एम्बार्गोस। कंप्लीट एम्बार्गोस इज दैट कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, कंप्लीटली किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना। और पार्शियल क्वारंटीन इज द पार्शियली किसी चीज को पार्शियल एम्बार्गोस करना। इंस्पेक्शन एंड ट्रीटमेंट एट द पॉइंट ऑफ रीजन्स, inspections and certifications at the point of entry, at the point of origins, inspections at the point of entry and utilization of post-entry quarantine measures. There is a procedures of plant quarantine. किस तरीके से प्रोसीजर जो है, किस तरीके से प्लांट क्वारंटीन का प्रोसीजर जो है वो चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन, इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर है वो एप्लीकेशन सबमिट करेगा। नेक्स्ट जो होगा वो एप्लीकेशन रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर्ड होने के बाद एप्लीकेशन क्वारंटीन सेक्शंस में जाएगी, उसको फिर क्वारंटीन ऑफिसर अगर असाइन करता है तो देन इंस्पेक्शन प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होगा। इंस्पेक्शन प्रोसीजर क्या है कि किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करना, जज करना कि either it is free from disease or not, अगर उसमें डिजीज है या नहीं है। इंस्पेक्ट करने के बाद अगर वो सैंपल पास हो जाता है उस प्रोसीजर में कि वो चीज क्लियर है कि इसमें कोई डिजीज का अटैक नहीं है, इसमें कोई पैथोजन नहीं है, तो देन वो एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आगे जाके मैं वो डिस्कस करूंगा कि वो सर्टिफिकेट क्या है। वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि ये जो सीड है या ये जो कोई भी चीज जो हम प्लांट की, हम प्लांट है, प्लांट प्रोडक्ट है, हम बेच रहे हैं, इसमें कोई चीज है वो उस पर डिजीज का अटैक नहीं है, देन वो इशू। And if selected sample go for lab exam, incubation, separation, isolation, identification के लिए जाए, then finish and send report, examine, verify and approve, और then issue phytosanitary certificate. So inspections procedures in station. First of all is visual inspections जो है ये nematode galls, smart disease, insect eggs के लिए जो है वो visual inspections, किसी चीज को inspect, visualize आमतौर पे जो इंस्पेक्शन जो है। इसके अलावा सेडिमेंटेशन टेस्ट होते हैं, बेयरमैन फनल मेथड्स, मोस्ट ऑफ ऑल ये हम जो नीमाटोड के एक्सट्रैक्शंस के लिए भी यूज करते हैं। इंक्यूबेशन टेस्ट फॉर सीड बोर्न फंजाई एंड बैक्टीरिया, सीड बोर्न फंजाई एंड बैक्टीरिया में फुजेरियम और इसके अलावा बैक्टीरिया में ज़ेंथोमोनास जो है ये यूज होते हैं। ग्राउंड टेस्ट फॉर सीड बोर्न बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई, सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ PCR, ये दोनों वायरस के बेसिकली डिटेक्शन मेथड हैं। वायरस को डिटेक्ट करने के पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, दैट इज ELISA। फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या है? इसमें हम जैसे डिग्री की मिसाल लें कि जिस तरह से हम कोई डिग्री करें BSc की, तो हमें एक सर्टिफिकेट इशू होता है या स्कूल की, तो हमें एक सर्टिफिकेट होता है, दैट इज अ सर्टिफिकेट, ये आपकी डिग्री का पर्पस है। तो ये आपने जो डिग्री की वो है, तो सर्टिफिकेट, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट इज दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच स्टेट्स दैट मटेरियल इज फ्री फ्रॉम इंजीरियस पेस्ट and should conform to plant import rules of importing country,
and certificate issued by any country should be conformed models and into international plant protection conventions, and here the certificate issues must be done within 14 days prior to shipment of materials. Merits of plant quarantine, it prevents migration of new pathogens from regions that is free from pathogen previously. मसलन कोई प्रोडक्ट हमें श्रीलंका से आ रहा है तो प्लांट क्वारंटीन अगर हम लगाएंगे तो अगर एक डिजीज श्रीलंका में है और पाकिस्तान में नहीं है तो क्वारंटीन के जरिए हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं एक से दूसरे कंट्री में, ये एक मेरिट है. It helps in international trading, breakup of sanitary and phytosanitary agreements under WTO World Trade Organizations. इसके थ्रू जो लॉज हैं जो हम किसी भी प्लांट क्वारंटीन के लिए लॉज यूज करते हैं उसके जरिए ट्रेड में जाहिर बात है कि एक अच्छी प्रोडक्ट आ रही है जिस डिजीज फ्री है तो एक जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट के जरिए पूरे प्रोसेस के थ्रू चल रहे हैं तो उससे ट्रेड में हेल्प होगी, ट्रेड इंक्रीज होगी. Demerits of plant quarantine, quarantine laws are used in case of airborne disease. कोई भी डिजीज अगर एयरबॉर्न है वो तो उसमें हम उसको क्वारंटीन मेजर्स के थ्रू जो है उसको नहीं रोक सकते बिकॉज विंड के जरिए आ रही है, कोई जनाब अगर स्टॉर्म के जरिए आ रही है तो उसको हम क्वारंटीन के जरिए रोक नहीं सकते. इट डिस्टर्ब द फॉरेन एंड डोमेस्टिक ट्रेड इन दिस ग्लोबलाइजेशन एरा जो है एक विद इन कंट्री स्टेट जो है ट्रेड में थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं इस प्लांट क्वारंटीन की वजह से. दैट इज द डिमेरिट. थैंक्स. There is a reason. The mic. हेलो वालेकुम सलाम. मेरा सवाल ये है कि प्लांट क्वारंटाइन रूल्स के हवाले से आप एलैबोरेट करें रूल्स के हवाले से मुझे और बिल 2014 के हवाले से आप एलैबोरेट. प्लांट क्वारंटीन रूल्स बेसिकली पाकिस्तान के अंदर 1967 में एक रूल है और 1976 प्लांट क्वारंटीन एक्ट के जरिए जो है वो रूल्स हैं प्लांट क्वारंटीन के. और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट प्लांट अथॉरिटी जो वर्क कर रहा है इस क्वारंटीन के ऊपर 2019 के रूल्स जो है लेटेस्ट इस पे जो है रूल है उसके थ्रू प्लांट क्वारंटीन स्टेशंस के जो अप्लाई और रूल्स फॉलो हो रहे हैं उसके थ्रू जो है प्लांट क्वारंटीन. और सीड अमेंडमेंट बिल 2014 के हवाले से नहीं सॉरी उसके बाद मुझे कोई आइडिया. जज़ाक. एक बार ये बताइए कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपका प्लान क्या है? You're supposed to deliver a research presentation here, not a review from an of इस पॉइंट के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया, आपने चैप्टर उठा के पढ़ दिया. प्रेजेंट जब करने आते हैं रिसर्च प्रेजेंट करने आते हैं. यस सर. लेक्चर देने नहीं आते. मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा है जो लेक्चर पढ़ने वाला को दिया लेकिन जैसे सही डायरेक्शन में इस्तेमाल कीजिए. यस रिसर्च कीजिए प्रेजेंट कीजिए. यस थैंक यू. थैंक यू. और कोई हो तो भाई ले आओ. मैं तो कोई क्वेश्चन हमारा कमेंट की जरूरत है जो कहना था मैंने कह दिया. और शुक्रिया आपका दोबारा शुक्रिया. सवाल क्लियर हो जाए. थैंक यू. Okay.